So we'll discuss what I studied today. So I started art and culture today. Culture is a word which has a root in the word cult, which means to cultivate or to worship something. हिंदी में इसे संस्कृति कहते हैं, जिसका रूट वर्ड क्री है। तो प्रकृति, संस्कृति और विकृति तीन वर्ड्स रहते हैं। सांख्य दर्शन कपिल मुनि के हिसाब से दो एसेंशियल एंटिटीज से हमारी बॉडी बनती है। एक होती है प्रकृति, एक होता है पुरुष। पुरुष is the consciousness, prakriti is the raw matter, raw conditions that are provided to us by the nature. उस कॉन्शियसनेस को यूज करके हम उस प्रकृति को कैसे टेम करते हैं, नेचर को कैसे मतलब बेंड करते हैं अपनी विल के अकॉर्डिंग, इज समथिंग इज दैट इज कॉल्ड एज कल्चर और संस्कृति। उस संस्कृति को उसी तरीके से मेंटेन करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज एथिक्स। इन द एब्सेंस ऑफ एथिक्स, ऑल ऑफ दैट कल्चरल डेवलपमेंट, एवरीथिंग विल गो टू डिक्लाइन, और उस स्टेट को हम लोग विकृति बोलते हैं। तो क्री के जो वर्ड के तीन रूट्स है, प्रकृति, संस्कृति और विकृति। तो संस्कृति के अंदर किसी भी चीज को मेंटेन करने के लिए जो चीज रिक्वायर्ड है दैट इज द एथिक्स। और इसीलिए यूपीएससी के अंदर एक एथिक्स नाम से सब्जेक्ट रखा गया है, टू मेक श्योर दैट the society as a whole does not go into a permanent decline just because of lack of integrity in the upcoming officers. तो द थिंग इज, मतलब जितनी ज़्यादा कल्चरल डेवलपमेंट रहेगी उतनी ही ज़्यादा आर्ट फॉर्म्स रिफाइन होती रहेंगी। आर्ट फॉर्म्स आर बेसिकली अ मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर एट एनी सिंगल पॉइंट इन टाइम। नाउ आप लोगों ने कल्चर के अलावा कई और वर्ड्स सुने होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कल्चर वर्सेस हेरिटेज। तो द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज इज दैट हेरिटेज इज समथिंग दैट इज एंसेस्ट्रल। तो आपको आपकी जो धरोहरें होती हैं वो पूर्वजों से मिली होती हैं, यू कांट चेंज देम। तो द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड हेरिटेज इज समथिंग लाइक कल्चर इज द बिल्डिंग स्टाइल। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर के अंदर जैसे डोम्स रहते हैं या फिर मीनारें रहती हैं, एंड सिंपली उसको चेंज किया जा सकता है, उसे ब्लेंड किया जा सकता है। उसके अंदर कोई और चीज़ का ब्लेंडिंग हो सकता है। इट कैन बी रिफाइंड अकॉर्डिंग टू वेरियस अदर कंडीशन, मतलब उसे यहाँ से कहीं और किसी और जगह पे ट्रांसफर किया जाए तो चेंज हो जाएगा। बट धरोहर इज समथिंग लाइक ताजमहल, it is built in one specific manner and that is how it is going to be staying. So matlab that is the difference between culture and heritage per se, the immutability of heritage. Now we come to what is unique about Indian culture. So the most unique thing about Indian culture is like its unity in diversity। मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट रहता है, वो assimilation का जो कंसेप्ट रहता है कि ऑल द डाइवर्स काइंड ऑफ कल्चर्स, उनका सिंथेसिस हो गया है, उनको असिमिलेट कर लिया गया एक ही कल्चर के अंदर। उसके अलावा इंडियन कल्चर इज लाइक वेरी अडेप्टिव, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, बट एट द कोर there is something like spirituality, a value based lifestyle, which doesn't mean that you're going just into the traditional things ऐसे थी तो we'll just do that. That value based mindset also comes with a basic scientific temperament inherent uh, in the culture. So that is the root of Indian culture, what differentiates it. Finally, we're talking about art. So art is a manifestation of culture. It can be in various forms. It can be tangible. It can be intangible. So the tangible things that might include your architecture, sculptures, paintings, pottery, handicrafts, and the other things. Performing arts form a part of the intangible culture. For the most basic performing art is music. Based on music, we have other things. We can have dance, theater, puppetry, circus. In recent times, there has been a use of martial art, the controlled use of force as culture. So this has been propagated mostly in the Eastern or Orientalist cultures, where we see like performing arts like matlab Japanese, Chinese, India के अंदर for example in the southern states we have this सिलम्बम, which is like मतलब तमिलनाडु के अंदर थोड़ा सा prevalent है ये, which is the use of sticks for self defense purposes. uh, yoga can also be a form of performing art, so that sort of thing.
And yeah, so that is about it, the things that I read